ladies and gentlemen, every week we bring new students across the country. We ask questions and we look for answers. So viewers, it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreyas. So viewers, it's time for us to introduce you our experts. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poetess and at present she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay, Guwahati. Next we have with us our expert is Brahmananda Pateri. He is a forest officer and environmentalist. तो हम हमारे बच्चों का परिचय ले लेते हैं। टीम बी में फिर से हमारे साथ मौजूद है सौम्यजीत चौधरी एंड सुदीप्ता चक्रवर्ती। नेक्स्ट टीम आई में है निशित सैकिया एंड वर्षिता मिश्रा। एंड टीम डी में है रिशाद हलीम बोरा एंड रागिनी शर्मा। In our first round, we will present a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh, and that tribal community is Apatani community. A big round of applause for all our models. This is the rapid question answer round. First question, team B. आपो बुलियांग क्या है? ऑप्शन ए युवाओं की सभा, ऑप्शन बी युद्ध सभा, ऑप्शन सी राजसभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अपतानी सूर्य को किस रूप में पूजते हैं? ऑप्शन ए बंधु रूप में, ऑप्शन बी पितृ रूप में, ऑप्शन सी मातृ रूप में। ऑप्शन बी पितृ रूप में। पितृ रूप में गलत जवाब। मातृ रूप में। अपतानी समाज में विवाह प्रक्रिया किस पक्ष से आरंभ होता है? ऑप्शन ए लड़की पक्ष, ऑप्शन बी लड़का पक्ष, ऑप्शन सी ग्राम परिषद। लड़का पक्ष। लड़का पक्ष करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। टीम आई के लिए हमारा पहला सवाल, अपतानी समाज में कब से परिषद का प्रचलन हुआ? ऑप्शन ए सदियों से, ऑप्शन बी 1952 से, ऑप्शन सी 1975 से। सदियों से करेक्ट आंसर। बुजुर्गों की ग्राम सभा को अपतानी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कापोक, ऑप्शन बी अखा बुलियांग, ऑप्शन सी बुलियांग तनी। रखा बुलियांग। नो, इट्स अखा बुलियांग। गलत जवाब। अपतानी समाज में मृतता के उत्सव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कतार, ऑप्शन बी मियोको, ऑप्शन सी उमातो। ऑप्शन बी मियोको। Here is the right answer. Okay, next question to the next team. पहला सवाल आप लोगों के लिए, बुलियांग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। बी 2। 2 प्रकार की है। करेक्ट आंसर। री क्या है? ऑप्शन ए एक उत्सव, ऑप्शन बी युद्ध कला, ऑप्शन सी पोशाक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अपतानी कितने प्रकार के मसालों के इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी अनगिनत। We would like to go for C. अनगिनत। Wrong answer. Here we end our first round. Okay, in our second round, it's all about poetry. Computer जी, पहला poem पहले टीम के लिए प्ले कीजिए। किरण धेनुएं, नरेश कुमार मेहता। उदयाचल से किरण धेनुएं, हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। दिखा रहे पथ इस भूमि का, सारस सुना सुना बोली। गिरता जाता फेन मुखों से, नभ में बादल बन तिरता। किरण धनुओं का समूह, यह आया अंधकार चढ़ता।
नभ की आम्र छाह में बैठा बजा रहा वंशी रखवाला। एक्सपर्ट। जी, बहुत ही सुंदर कविता अभी अभी हमने सुनी, किरण धेनुए। अब इसका सारांश बता दीजिए। कवि नरेश कुमार मेहता ने अपने इस कविता किरण धेनुए में सूर्योदय का वर्णन एक ग्वाला के दिनचर्या से किया है। एक ग्वाला जिस प्रकार अपनी गायों एवं बछड़ों को चढ़ाने ले जाता है, उसी प्रकार सूर्य एक ग्वाला का रूप धरकर अपने किरणों को पूरे संसार में भिड़ा देता है और पूरे संसार को उज्जवल कर देता है। यह जो संसार सूर्योदय के पहले जिस प्रकार की ठंडक एवं काली छाया में रहती है, सूर्योदय होने से सूर्य की किरणें पूरे संसार को उज्जवल तथा गर्माहट प्रदान करती हैं, जो कि हमारे इस धरती के में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक है। अंत में कवि ये कहना चाहते हैं कि सूर्योदय की लालिमा एवं इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि पूरे संसार को यह एक इतने लुभावने दृश्य प्रदान करती है कि हम देखते ही रहते हैं। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है पूरी कविता की। कंप्यूटर जी, टीम आई के लिए अगला कविता पेश कीजिए। मंगल वर्षा, भवानी प्रसाद मिश्र। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। बादल आए आसमान में धरती फूली री, अरी सुहागन भरी मांग में भूली भूली री। बिजली चमकी भाग सखीरी, दादुर बोले री, अंध प्राण ही वही उड़े पंछी अनमोले री। छन छन उठी हिलोर मगन मन पागल दरसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। एक्सपर्ट। आप इस कविता का सारांश बताइए। जब बारिश की पहली बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो धरती की जब प्यास बुझती है तो बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। आसमान में काले घने बादल होते हैं, पक्षी बिल्कुल उन्मुक्त होकर पूरे गगन की सैर करते हैं। और तो और जब पानी भरता है गड्ढों में और तालाबों में तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे धरती ने एक सुहागिन की तरह अपनी मांग में सिंदूर भरकर श्रृंगार कर लिया हो। मेंढकों के टर्टर, पक्षियों की चहचहाहट इस पूरे दृश्य को बहुत सुंदर बना देती है। यह मौसम सभी को पसंद होता है और सभी के लिए बहुत लुभावना होता है। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। दरअसल ये जो गीत है मंगल वर्षा, किसानों के लिए वर्षा का आना उनके लिए खुशहाली और उनके लिए वैभव संपन्नता लाने का द्योतक है। तो इसलिए ये गीत किसानों के लिए है और किसानों की खुशी को सावन आने पर व्यक्त करती हुई ये कविता है। So we will move to Team D. कंप्यूटर जी, अगला कविता प्रेजेंट कीजिए। दो बिहाग, मदन वात्स्यायन। संयोग। गोरी मोरी गेहुवन सांप महुर धर रे, गोरी मोरी गेहुवन सांप। फागुन चैत गुलाबी महीने, दोंगा पर आई जैसी चांद। लहरे वात गात मद लहरे, गोरी मोरी गेहुवन सांप। गोरे गात रश्मि वत पतरे, रेशमी किंचुल चमाचम। कबरी कुसुम चित कबरी, गोरी मोरी गेहुवन सांप। टोना नैन तरंग अंग में, रोक ली रात मेरी राह। लिपट गई अंग अंग लपट सी, गोरी मोरी गेहुवन सांप। अधर परस आकुल मन मेरा, आंगन घर न बुझाए। निशि नहीं नींद न जाग दिवस में, गोरी मोरी गेहुवन सांप। एक्सपर्ट। आप इस कविता का सारांश बताइए। इस कविता में सबसे पहले तो एक नायिका के ऊपर थोड़ा वर्णन किया गया है। नायिका को जो है एक गेहुवन सांप के साथ उनकी तुलना की गई है और उनका नख शिख पूरा वर्णन किया गया है। नायिका रेशमी कपड़े पहनती है तो केचुए जैसे वो चमक उठती है और यहाँ पे एक भाव छिपा है, अगर हम गहराई से देखें, वो है श्रृंगारिकता का भाव। तो और अंतिम पंक्तियों में नायक का जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है नायिका के ओर।
ठीक है, इसमें नायिका की मादकता का वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। अगर देखा जाए तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है कि वो जो नायिका है वो इतनी सजी धजी और इतनी ज़्यादा उसके अंदर आकर्षण है कि नायक उसके चंगुल से, एक तरह से तो वो बहुत अच्छा है कि उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है नायक, किंतु वो उसके एक ये उसके लिए विष बन गया है कि उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहा और किसी और कार्य की ओर जा नहीं पा रहा। शायद उसके जीवन के सारे काम अधूरे पड़े हैं, जो भी वो करना चाहता है वहाँ की ओर वो घर छोड़ के निकल नहीं पा रहा है। तो बहुत अच्छी आपने व्याख्या की। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Okay, here we end our poetry round, right? Means it's time for us to know the scores for the second round. Team B को मिला है 20 points. Next, Team I को मिला है 19 points. Team D को मिला है 22 points. Okay, it's time for us to play the game. That means the third round. Still, I have to tell you the rules. You have to select a number from 1 to 50. And then, that number, it might be displayed in the heaven side or it might be displayed in the hell side. If it displays in the heaven side, then you got a special power. And that special power is that you have to choose a topic by your own. But if that number displays in the hell side, then you are not in the safe zone. And that special power directly goes to our experts. Okay, Team B, select a number. 49. Computer जी, play कीजिए Team B के लिए. Okay, so here starts the game. आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं ऊपर With number 49. Number 49. Hope that today you get that special power. Okay, but sometimes some of the students also get into that unsafe zone. But still, hope for the best. अब 3 नंबर आएंगे। पहला नंबर है 46. You are very close enough. Next is 32. Next is number 2. Okay, no 49. That means 46, 32 and 2. Okay, no 49. हेल्प पर देखते हैं। Is number 24. बच गए। Okay, happy enough that it's not in the hell? Yeah, it's better that it's not in the head. Yeah. Okay. Okay, that last option, that 5 cards, you have to pick up any one. Pass it to me. Okay, Team B को जो topic मिला है is wildlife conservation need of the hour. So there are a range of causes for which wildlife is getting degraded today. Now it's a prime responsibility of the citizens, of the vigilant citizens as well as the government to protect this wildlife so as to enrich the flora and fauna of the country. Various steps have been taken and there are many more steps to be taken at both the center and the state level. So various number of zoos, wildlife sanctuaries and national parks have been set up in the country where tribal communities are also living near the zoos. They are also playing a great role in protecting the wildlife there, and they also use the forest and wildlife sanctuaries where animals are made to live in their natural habitats, which also helps them to rear and breed the species so that their numbers get increased. So if the still poaching and deforestation kind of things occur, so now security needs to be increased in those areas so that our animals can be protected. We saw many animals getting extinct, such as the leopard, which is the fastest animal on earth of a particular species. Then we have seen the kiwis, we extinct from the earth. Many animals such as Royal Bengal tiger, rhinoceros in Great India, one-horned rhinoceros, they are on the verge of extinction. So these steps are to be taken by each and every citizen of the nation and of the world so that we can protect our ecosystem and the earth. You know how Kaziranga has came up? Because Kaziranga has came up during 1905 when Lady Curzon tried to visit the area, want to see the rhino. She could not see the rhino whole day. Then he pursued her husband, Viceroy Lord Curzon. Accordingly, the Kaziranga came up and the protection. Now the 2,410 rhinos are coming up out of nothing. So this is the things how we are working with this, protecting the nature by protecting the wildlife. Wildlife is an indicator of the forest. If forest there, wildlife is there.
If forest is not there, wildlife is not there. So that is very important to protect the wildlife, to protect the humankind. Thank you. Okay, now moving on to Team I. Which number? I'm 11. Computer G, play कीजिए. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number for hell. Okay. आगे बढ़ रहा है, दिल थाम के बैठो. Okay, 11, 11, 11. 11th number might be lucky today. You never know, anything can happen. Yes. Okay, first number which is going to display in the heaven side is number 11, number 11, number 11. No, it's 39. Okay, next 28. Next is 17. We're very close enough. Okay, last time it was hell, but hope so. It's not this time. Okay, number 11. Okay, no, it's number 6. बच गए. Okay. तो अब the last option is that 5 cards. You have to select anyone. Team Aiko, जो topic मिला है is global warming and deforestation. A couple of decades back, global warming was more of a prediction rather than happening. But sadly, nowadays, we don't have the luxury to say that, because currently, the whole world is suffering from this problem. Global warming is the rise of temperature on the Earth's surface due to the greenhouse gases captured within the ozone layer. The average temperature is increasing everywhere, like the winters are becoming colder, and the summers, of course, they are unbearably hot. Now let us imagine this on a larger scale. The atmosphere traps the heat of the radiation, and it is what we call greenhouse, and it is greenhouse effect, and is the major sign in global warming. Similarly, deforestation. Deforestation is when we cut a lot of trees for our selfish needs, we can say. Because trees are really very important. They give us oxygen and take in carbon dioxide, which is a greenhouse gas. So it means that if less trees, this means less absorption of carbon dioxide, and hence leading to global warming. The grim reality we face is that अगर कोई precautions नहीं लिए गए तो ये situation और worse हो जाएगी, क्योंकि global warming से हर जगह का temperature increase हो रहा है. So we have to contribute in some kind of programs or something. Like all little steps can change the world. Thank you. Okay, बहुत thank you. Very well said. Expert. It is a very nicely spoken. Greenhouse is a very responsible for the global warming. We cannot do anything about this global warming, but we cannot plant tree. We can plant tree. That is why the afforestation is very much essential to stop this global warming phenomenon, which is a major factor. I think most of the cities in the seashores are going to sink very shortly. Thank you. Thank you, sir. Moving on to the next team, Team D. Okay, choose a number. 1. 1. Computer G, Team D के लिए play कीजिए. In the last group, someone has selected number 50 and today you have selected number 1. Okay, anyway, let's check your luck. छाया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. क्या होने वाला है यार? Number 1, कुछ भी हो सकता है. Heaven में भी आ सकता है, hell में भी आ सकता है. 3 numbers will be displayed in the heaven side. Hope that you get this special power. पहला नंबर है Number 1? No, it's number 45. Next is number 22 and number 14. Okay, 45, 22 and 14. No number 1. Okay, hell में जो आया है is number 26. Okay, that last option, that 5 cards placed in front of you, select anyone. Okay, Team D को मिला है Red Panda Conservation Plan. Red panda is a mammal native to the eastern Himalayas and southwestern China. They are in the accounts of endangered species. Isn't it bad to hear that every day we hear a new species going into the red data book? The IUCN
रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि किसी भी स्पीसीज़ का अगर 10,000 से कम गिनती हो तो उन्हें एंडेंजर्ड मान लिया जाता है। रेड पांडाओं का भी गिनती 10,000 से कम है। वो बड़े ही कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी बर्मा के कई भी जगहों में उन्हें पाया जाता है। अरुणाचल के एक प्रमुख ग्रुप उन लोगों ने बनाया है ताकि वो रेड पांडाओं को बचा सके। एक बात है, उनका हैबिटेट हिली रीजन में है और उसी रीजन में अभी उनकी गिनती कम होती जा रही है। सो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज associations like the Arunachali people have made alliances. It's also our duty, it's on our part that we make contributions to save the nature. Thank you. Experts? So Arunachal has a potentiality to preserve this animal, and awareness is very much active in this regard. And government is also taking a lot of steps, including the NGOs and villagers. So we think that we will be able to keep the red panda in better condition, and it could be come out from the IUCN list. Thank you. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा थर्ड राउंड। इट्स टाइम फॉर स्कोर्स। राइट, टीम बी को मिला है 19 पॉइंट, टीम आई को मिला है 20 पॉइंट एंड टीम डी को मिला है 22 पॉइंट। Now I'm going to announce you the final scores. टीम बी को मिला है 45 पॉइंट, टीम आई को मिला है 45 पॉइंट एंड टीम डी को टोटल स्कोर मिला है 48 पॉइंट। Viewers, it's time for us to say you goodbye. New ideas, new question and answer will be right back in our next episode. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।